Hello, Nivedita, Sajal, Samriddhi. Very good evening. I have not shared any links outside of the website today. Okay, so we would be conducting this session only for three of you or for anybody else who would be joining using the website link. Okay, because sharing the links outside might terminate the lecture someday. So that is why we are not doing it anymore. Okay, so let's quickly start the session. Do you remember what topic did we study last time, or what was the last topic that we studied in our lectures? Do you remember? And everybody, please try to be active on the WhatsApp group as well. If there are any queries, we will be resolving it. But it is really important for us to follow certain curriculum here, and that is why I would not be sharing any links outside of the website or on the WhatsApp group today. Okay, so that's great. Uh, So we discussed about pivot charts. Okay, so we discussed about pivot charts. Okay, so what is the difference between a normal chart and a pivot chart? Pivot chart allows you to create the data into multiple formats, right? That is the whole meaning of pivot chart, because just like pivot tables, it allows you to create multiple permutation and combination of the pivot charts or the normal tabular information. So that is really important for us to understand that the main difference between a normal chart and a pivot chart is what? Pivot chart allows you to create multiple combinations of a data. That is the last topic that we studied in the last class. Okay, so Sajal, you were there in the last class. Samriddhi, were you there in the last class? Nivedita, Mansi, please confirm. Sajal, you were there, right? Now, please confirm. Samriddhi, Nivedita, Mansi, were you there in the last class where we discussed about pivot charts? No. Okay, Samriddhi, you were also not there. Mansi, you were also not there. Nivedita, you were there. Okay. We also discussed about the 3D map chart, right? So Sajal was the one who displayed his screen and showed that how 3D map charts are used. So we completed 3D map as well, right? Now we are coming into this line and column. So this is really, really simple. This is similar to what we have studied already. Okay, so I'll just click on it to show you how it works. Okay, you can select any location. Okay, so this is the location. See where you want the spark lines to be placed. So I want the spark lines to be placed here. It is showing invalid. Why invalid? Choose the data that I want. Okay. What is a spark line? Spark line, for spark line, I have to select this. Okay. And then I can select this. Yeah, that is how the spark line goes. Okay. So what we have to do is we have to select a certain amount. Okay. Certain amount column, then go to insert, and then we can click either on column chart or line chart, and then we can display that how this data is showcased. We can also create a bigger part of it. Okay, we can also create a bigger part of it where we can increase the size of this column. So this is particularly created. This is particularly created to show in one cell. In one cell. This is only one cell. Generally, what we do when we create a chart, generally what we do when we create a chart, it consumes multiple cells. But this is displayed in one cell. That is the only difference between a normal chart and this line and column chart and win-loss chart. Do you understand this? Do you understand this? The only difference between a normal chart and this chart is that it summarizes the data into one cell only. Did you understand this? Yes. Okay. Yes. What about others? So Sajala is confirmed. Neveda is confirmed. What about Samriddhi, Mansi, Divya?
Okay, that's great. Now we are going into a very important discussion for today. Okay, I cannot do anything about those people who have not followed the instructions earlier and have not joined the session. Okay, so I cannot do anything about them. So let us discuss about one of the core concepts of Microsoft Excel, which is slicer. Slicer is really, really important. So let us discuss that. Okay, what I'm doing is I'm selecting this data. Okay, I'm selecting this data and clicking on this slicer button. Generally, what is the meaning of slicer? Generally, what is the meaning of slicer? Generally speaking, what is the meaning of slicer? Slices, slicer, anything? Slices, slicer, anything that you are aware about? What is the meaning of slicer, slices, anything? क्या होता है स्लाइसर का मतलब, स्लाइसेस का मतलब? स्लाइस करना, पीस करना. ओके, स्लाइसर का मतलब स्लाइस करना. ओके, दैट्स ग्रेट सजल, थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट. स्लाइसर का मतलब स्लाइस करना, दैट्स ग्रेट. स्लाइसर या स्लाइस करने का मतलब होता है छोटे छोटे पीसेस में उसको डिवाइड करना, राइट? स्लाइस करने का मतलब यही होता है, करेक्ट? सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम लोग जितना भी डेटा है उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करने वाले हैं एंड उतना ही डेटा शोकेस करने वाले हैं. स्लाइसर का मतलब ऐसा ही कुछ होना चाहिए, राइट? सो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग को ये डेटा सिलेक्ट करना है. देन वी हैव टू क्लिक ऑन दिस स्लाइसर बटन एंड देन देखिए यहाँ पर लिखकर आ जाएगा कि डेटा नहीं कैच कर रहा है. एनीबडी नोस ये डेटा क्यों नहीं कैच कर रहा है? एनीबडी नोस ये डेटा क्यों नहीं कैच कर रहा है? इसमें लिखकर आ रहा है कनेक्शंस इन दिस वर्कबुक, कनेक्शन फाइल्स. एनीबडी नोस कि ये डेटा क्यों नहीं कैप्चर कर रहा है? एनीबडी? एनीबडी नोस कि ये डेटा क्यों नहीं कैप्चर कर रहा है? आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल. Anybody knows what issues we are facing? We have to convert the data in the pivot table form. Pivot table form or just normal table form? Pivot table form or normal table form as well? Sajal, pivot table form or no? Pivot. Okay. Okay. Let's try doing it by converting into a normal table. Okay. So what I'm doing is I have selected this data. I am going to insert and clicking on this table button. So this data would be converted into table. This we have discussed earlier as well, that converting into a table means that you are giving header to the data. आप clearly बता रहे हो Excel को that these are the headings and this is the main data. Okay. Now let's try doing it again. Okay. Let's try doing it again. Insert and slicer. See, सजल ये तो आ गया. दिस शुड नॉट कम, राइट? आपने बोला था पिवट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. बिना पिवट के भी आ जाता है क्या? बिना पिवट के भी आ जाता है क्या? बिना पिवट के भी आ जाता है क्या? पिवट टेबल के बिना भी आ जाता है क्या? यस, पिवट टेबल के बिना भी आ जाता है. सो आपने अगर कंट्री नेम सिलेक्ट किया, आपने अगर कंट्री नेम सिलेक्ट किया एंड ओके क्लिक किया. ओके, सो देखिए यहाँ पर लिस्ट आ गई. यहाँ पर लिस्ट आ गई कंट्री नेम्स की जो आपके डेटा पे है. अब if you click on Bahrain, only Bahrain's data would be visible. If you click on India, only India's data would be visible. आप मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हो क्या? यस, आप मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हो. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड दिस फंक्शनैलिटी?
Yes, understood this point. Okay. Now please tell me, uh, what do you think is the utility of this data? What do you think is the utility of this data? Okay, just a second. I'll resolve the queries on the WhatsApp group. Yes, thank you so much. I think most of the queries in the group have been resolved. Thank you so much, Sajal, for your cooperation. Okay. And I'll not describe the mistake that everybody was doing. It is really a basic mistake. So I will not describe it. But as of now, we have completed the slicer part of it. Now you'll have to go through the recording to see what kind of slicer or what kind of details you can use in slicer. Okay. So you'll have to go through the recording, which I would be making available within the next 24 to 48 hours. Okay. And then you'll have to go through this line, column, and the slicer button. Okay. Okay. Now, please tell me and everybody else that how you can actually use this slicer in your everyday use. How can you use it effectively? How can it increase your efficiency? How you can use it? Please tell me. What do you think? How you can use it? Even if you're not aware about how you can use it, please feel free to write on the chat box that you're not aware. That's okay. That's completely okay. Don't worry about it. Not used. Okay, Nikhil. Not an issue. No idea, Dhruv. Okay, that's okay. I'm just being active on the WhatsApp group as well today to resolve everybody's query. Okay. What about others? Not aware. Not aware. Okay. Okay. Now everybody is able to join. That's great. To see some specific amount of value. Okay. Okay. I'll show you one thing. Okay. Imagine a scenario that you have created a chart. Okay. You have created a chart using this.
data. Okay. Now every time you filter on countries name, this chart changes, right? Every time you filter countries name, this chart changes, right? Right? This chart is changing every time you are clicking on the country's name or you are filtering the country's name. Is that right? This chart is changing. ये chart change हो रहा है based on which country आप यहाँ पर select कर रहे हो. अगर आप यहाँ पर India select कर रहे हो, then you can see यहाँ पर सिर्फ India का data show हो रहा है. If you are selecting UAE, then सिर्फ UAE का data show हो रहा है. Correct? Correct? नाउ द ब्यूटी ऑफ स्लाइसर इज दैट जैसे ही आप यहाँ पर कंट्री का नेम क्लिक करोगे, अभी आपको पूरा फिल्टर करना होता था, वहां जाना होता था, फिल्टर करना होता था, बट यहाँ पर जैसे ही आप प्रेजेंटेशन देते देते बोलोगे फॉर एग्जाम्पल क्लिक ऑन बहरीन, तो आपको सिर्फ बहरीन का डेटा दिखेगा. आप यूएई पर क्लिक करोगे, आपको सिर्फ यूएई का डेटा दिखेगा. आप इंडिया पे क्लिक करोगे, आपको सिर्फ इंडिया का डेटा दिख रहा होगा. राइट. इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग एंड मजेदार बनाने की कोशिश करते हैं. ओके. ये आपका पूरा डेटा है. ये आपका पूरा डेटा है. ओके. नाउ लेट्स ट्राई टू ऐड सर्टेन डिटेल्स हियर. ठीक है. यहाँ पर हम लोगों ने डी ई एफ जी किया और कंट्री को रिपीट करते हैं. कंट्री को इंडिया करते हैं या यूके करते हैं. ठीक है. और यहाँ पर अमाउंट ऐड करते हैं. ये हम लोगों ने ऐड किया. अब जैसे ही आप इंडिया में मल्टीपल है, जैसे आप इंडिया में क्लिक करेंगे, देखिए आपको मल्टीपल चार्ट्स दिख गए. जितना आपका ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा होगा उतना ही ज्यादा स्लाइसर आपके लिए यूज में आ जाएगा. क्योंकि आपको जैसे आपने इंडिया पे क्लिक किया, आपको समरी टेबलर फॉर्मेट में भी दिखने लगी और आपको चार्ट फॉर्मेट में भी दिखने लगी. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्लाइसर. इसी बेस पर, जिसको आप डेटा एनालिटिक्स बोलते हो, जिसको आप डेटा सॉफ्टवेयर बोलते हो, वो बहुत सारे बनाए जाते हैं. वहां पर डायरेक्टली बटन्स दिए होते हैं which are created on the basis of slicer also. Slicer, power pivot, power query, these are the originating points for larger data analytics और larger data interpretations. अगर आप यहाँ पे यूएई पे क्लिक करते हो, देखो आपको यूएई का डेटा दिखता है. आप यूके पे क्लिक करते हो, आपको यूके का डेटा दिखता है. दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट वे टू create dashboards which are generally used in data analytics. फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको समझ आता है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको समझ आता है क्या? इफ यस, प्लीज फील फ्री टू अनम्यूट योरसेल्फ और आप उसमें बताइए कि क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे. प्लीज फील फ्री टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड आप बता सकते हैं. इवन यू कैन गो फॉर द चैट बॉक्स आल्सो. आई एम कंप्लीटली ओके विद इट. ओके. बट आप प्लीज हमें स्टेप्स बताइए, व्हाट स्टेप्स यू विल फॉलो कि आपके ये तीनों काम हो जाए जो हमने स्क्रीन पर करके रखे हुए हैं. यहाँ पर डेटा रहेगा, यहाँ पर स्लाइसर रहेगा और यहाँ पर एक चार्ट फॉर्म रहेगा जो कि डैशबोर्ड के फॉर्म में रहेगा और बार बार चेंज होता रहेगा बेस्ड ऑन विच यूनिट यू सिलेक्ट. अगर आपको यूके एंड इंडिया देखना है, आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो. अगर आपने यूके एंड इंडिया सिलेक्ट कर लिया, देखिए आपको यूके एंड इंडिया का डेटा यहाँ पर शो होने लगेगा. So please tell me the steps that you will follow to create this kind of a dashboard. This is interesting, right? So please tell me what steps you will follow. Please tell me. Please tell me. Okay, data and table format. आप सबसे पहले table format पे करोगे, फिर you will go to insert option and you will create slicer. That's great. Then you will start filtering using slicer. Okay, that's great. Okay, that's good. First, create a table and insert a chart. After that, click on slicer and select from the various columns in your table and go through the information. That's great. Now, the important part here is that this slicer could be used, or this slicer is considered as an advanced functionality, right? But आपने देखा आपको कितने सिंपल तरीके से समझ में आ गया. डू यू अग्री? आपको बहुत सिंपल तरीके से स्लाइसर समझ में आ गया. इनफैक्ट आपने उससे डैशबोर्ड बनाना भी सीख लिया.
जो कि कितना इंटरेक्टिव रहेगा। इमेजिन यू आर वर्किंग एट योर कंपनी और यू आर वर्किंग फॉर एनी प्रोजेक्ट इन योर कॉलेज, एंड आप वहां पर सिर्फ और सिर्फ डेटा को समराइज करके पिवट टेबल में नहीं बताते हो, जबकि आप उसके चार्ट्स भी बनाते हो, एंड वो चार्ट्स इतने इंटरेक्टिव होते हैं कि व्हेन यू क्लिक ऑन सर्टेन बटन्स व्हिच आर क्रिएटेड यूजिंग स्लाइसर, आप उसको आराम से एडिट कर सकते हो, और आप आपका डेटा आराम से चेंज होता जा रहा है। इजंट इट मोर इंटरेक्टिव, इजंट इट मोर एक्सप्रेसिव? जनरली ऐसा बोला जाता है कि फाइनेंस में expression of thoughts is really really important, and displaying right data at the right time is one of the major part of any presentation. Okay, so that is why it is really really important for us to understand that this presentation is not only just limited to basic slicer, basic pivot tables, basic charts, but it is more of a presentation point of view, that अगर हम आपसे बात कर रहे हैं, एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, सो आई शुड बी एबल टू सी ओनली द इंडियन डेटा। ओके, तो अगर हम आपसे इंडिया से बात कर रहे हैं या इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया बस का डेटा दिखना चाहिए। वंस आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट यूके, हमें सिर्फ यूके का डेटा दिखना चाहिए। दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर अस। अच्छे से ये बात समझ आती है, क्लियर होती है? अच्छे से ये बात समझ आती है, क्लियर होती है? इफ यस, प्लीज कंफर्म ऑन द चैट बॉक्स। यस, ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? यस, ध्रुव, बढ़िया। ओके, देखिए एक्सेल अगर आप सीख ही रहे हो, तो आपको साथ साथ ये भी सीखना चाहिए कि आप उसका डैशबोर्ड्स कैसे बनाओगे, आप उसमें इंटरेक्शंस कैसे करोगे, आप उसमें वो चीजें कैसे करोगे जो किसी और को मे बी ना आए या कम आए। राइट, सो दैट इज व्हाई इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ये चीज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। नाउ ये टाइमलाइन जो है, इसके लिए हमें कुछ डेट्स की जरूरत पड़ेगी, ओके, इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। दैट इज व्हाई वी आर स्किपिंग दिस टाइमलाइन बटन। ये प्लीज आप चेक कर लीजिएगा कि टाइमलाइन बटन हम लोग बाद में कंप्लीट कर लें। ठीक है, आई हैव रिटन इट इन माय शेड्यूल कि टाइमलाइन हम लोगों को बाद में कंप्लीट करना है, इसके लिए एक बेस डेटा बनाना पड़ेगा जो कि अभी रेडीली अवेलेबल नहीं है। इसके बाद बात करते हैं लिंक की। हाइपर लिंक कौन कौन समझता है? हाइपर लिंक कौन कौन समझता है? प्लीज टेल मी। हाइपर लिंक कौन कौन समझता है? प्लीज टेल मी। ओके, इंसर्ट इज द लास्ट स्टेप दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, हम लोग लिंक, टेक्स्ट बॉक्स, हेडर एंड फुटर, ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, एंड देन वी वुड बी क्लोजिंग द सेशन। सो प्लीज टेल मी, लिंक किस किस को पता है? हाइपर लिंक क्या होती है और उसका यूज कैसे होता है? हाइपर लिंक आपको पता है सचिन? प्लीज बताइए। प्लीज बताइए सचिन, हाइपर लिंक। लिंक टू एक्सटर्नल विंडो। लिंक टू एक्सटर्नल विंडो, इसका मतलब ये होता है कि उस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हम किसी एक्सटर्नल चीज पर चले जाएंगे। करेक्ट, चलिए बनाने का ट्राई करते हैं। अच्छा, अगर इसमें कोई भी डिफिकल्टी आती है, यू आर फ्री टू यूज एनी सोर्स यू वांट। ठीक है, और अगर डिफिकल्टी नहीं आती, दैट्स रियली ग्रेट। हम लोग लिंक पर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, हाइपर लिंक पर क्लिक कर रहे हैं। हम लोगों ने क्लिक किया, इसमें प्रोसेस आ रहा है। ठीक है, अब नाउ इट इज आस्किंग कि आपको एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज पर जाना है, या फिर आपको किसी डॉक्यूमेंट पर जाना है, या फिर आपको कोई न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है, या फिर आपको ईमेल आईडी बनानी है। ठीक है, आपको किस पर जाना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी के लिए हम लोग ईमेल एड्रेस लिख देते हैं। ठीक है, ईमेल एड्रेस, तो हमने ईमेल एड्रेस लिखा, द लैंड ऑफ लर्नर्स एट द रेट gmail.com, और टेक्स्ट टू डिस्प्ले में जो लिख कर आना चाहिए विच इज क्लिक हियर। ठीक है, हमने ऐसा किया हुआ है, और हमने ओके प्रेस किया। देखिए जैसे हमने ओके प्रेस किया ना, यहाँ पर आ गई क्लिक हियर बटन। अब हम इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, द लैंड ऑफ लर्नर्स को एक मेल जाने लगेगा। ऑल्दो आउटलुक इसमें एक्सेसिबल नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर मेल नहीं दिख रहा है, बट जैसे ही आप इसको आगे बढ़ाओगे, आपको आउटलुक दिखने लगेगा और आपको मेल सेंड दिखने लगेगा। बेसिकली यू कैन एक्सेस अ सर्टेन इमेज, वेबसाइट, डॉक्यूमेंट फ्रॉम एक्सेल। ओके, इसी के साथ हम लोग वापस इसको क्लिक करते हैं। ठीक है, हम लोग वापस इसको क्लिक करते हैं। ठीक है, अब हम लोग वेब पेज की बात करते हैं, वेब पेज की बात करते हैं, और हम लोगों को पेज पर जाना है। ठीक है, हम लोगों को पेज पर जाना है, और हम लोगों को
सर्च करना है, एड्रेस है www.thelandoflearners.com। ओके, और हम लोगों ने इसको ओके कर दिया। अब जैसे हम लोग इस पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या ओपन होता है। हम लोग इस पे क्लिक करने वाले हैं, ठीक है। www.thelandoflearners.com ओपन हुआ, और इसी के साथ आप देखेंगे कि हमारी वेबसाइट जो कि www.thelandoflearners.com है, वो यहाँ पर ओपन हो गई है। हाइपर लिंक का मतलब होता है, एड्रेस गलत है, रॉन्ग चेट सा। ओके, ओके सजल। ओके, सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हाइपर लिंक का मतलब होता है एक ऐसी लिंक जो कि एक्सटर्नल चीजों की ऊपर हो सकती है, बट इट कुड बी इंटरनल ऑल्सो। किसी डॉक्यूमेंट, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट की भी लिंक हो सकती है वो। इट कुड बी अ नॉर्मल लिंक एज वेल, इट कुड बी लिंक ऑफ अ वेबसाइट एज वेल, इट कुड बी लिंक ऑफ एन ईमेल एड्रेस एज वेल। ठीक है। हाइपर लिंक का मतलब होता है कि आप वहां पर लिंक ऐड कर सकते हो, आप वहां पर लिंक ऐड कर सकते हो। ये हमारी वेबसाइट यहाँ पर आ जाती है। ठीक है। इसमें आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर कुछ कुछ पॉपअप्स भी आते रहेंगे, विच इज कोर पार्ट ऑफ माय वेबसाइट। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाती है। ये देखिए निखिल, आपने अभी एनरोल किया, देखिए यहाँ पर आने लगा आपका नाम। ठीक है, इस तरह से ये शोकेस होता है। ठीक है, अब हम लोग इसको लेस हटा देते हैं यहाँ से। अच्छा, अब हम लोग टेक्स्ट बॉक्स की बात बात करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स बहुत ही सिंपल सी चीज है, हम सभी लोगों को पता है। टेक्स्ट बॉक्स हम लोग नॉर्मली बना सकते हैं और वहां पर अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीत अग्रवाल इज फाउंडर ऑफ द लैंड ऑफ लर्नर्स। ये आराम से यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में लिखा जा सकता है, इसके साइज भी एडिट किए जा सकते हैं। ये एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज हो जाती है। इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे बटन पर, जिसका नाम है हेडर एंड फुटर। जैसे हम लोग इसको क्लिक करते हैं तो एक्सेल हेडर एंड फुटर में कन्वर्ट हो जाता है। हेडर एंड फुटर का क्या फायदा हुआ? हेडर एंड फुटर का क्या फायदा हुआ? कैन एनीबडी टेल मी? हेडर एंड फुटर, देखिए सेकंड बटन ऑटोमेटिकली एक्टिव हो गई। ये जो पेज लेआउट की बटन है ना, प्लीज कर्सर पर ध्यान दीजिए। ये जो पेज लेआउट की बटन है, सेकंड बटन, ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हो गई, यानी कि आप हेडर एंड फुटर मोड पर जा चुके हो। अच्छा, हेडर एंड फुटर का क्या फायदा होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ हेडर एंड फुटर? व्हाट इज द यूज यूटिलिटी ऑफ हेडर एंड फुटर? कैन एनीबडी टेल मी? What is the use or utility of header and footer? Can anybody tell me? Can be used to give page number or a similar heading and footer to every page. Yes. So for example, अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं कि this document belongs to the land of learners, तो वो सारे पेज में लिख कर आने लगेगा the land of learners। ठीक है, the land of learners, ऐसा सारे पेज में वो लिख कर आने लगेगा। That is the beauty of header and footer। इतना हम लोग को समझ आता है क्या? देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं द लैंड ऑफ लर्नर्स। ठीक है, अब हम लोग जैसे ही इसको करेंगे, देखिए सारे पेजेस में द लैंड ऑफ लर्नर्स लिख कर आने लगा ऑटोमेटिकली। हम लोग जो भी चीजें बनाएंगे सब में द लैंड ऑफ लर्नर्स लिख कर आ रहा होगा। ठीक है, ये हम लोगों का हेडर एंड फुटर का डिस्कशन खत्म होता है। अच्छा, फुटर भी होता है इसी में नीचे, फुटर भी होता है। दिस इज हेडर, सिमिलरली फुटर भी होता है जो कि नीचे तरफ होता है। आप वहां पे जो भी लिखोगे वो नीचे तरफ कॉमन हर एक जगह पर आने लगेगा। इसके बाद यहाँ पर आता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट इज समथिंग दैट वी ऑल हैव यूज्ड इन आवर चाइल्डहुड। ठीक है, पहले इसको नॉर्मल व्यू कर देते हैं। ठीक है, अब वर्ड आर्ट जो है वो हम सभी लोगों ने चाइल्डहुड डेज में यूज किया ही है, बट लेट जस्ट क्विकली यूज इट। आपने यहाँ पे वर्ड आर्ट सेलेक्ट किया, देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे सुप्रीत अग्रवाल, और वो यहाँ पर वर्ड आर्ट के फॉर्मेट में आ जाएगा। आप इसको मल्टीपल तरह से एडिट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक सी एडिटिंग होती है। आप इसके कलर चेंज कर सकते हैं, आप इसकी आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, आप इसको इसकी हाइट विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं, और आप यहाँ पे शेप भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये चीज। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये चीज। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट के अंदर एक और बटन दिया हुआ है जिसका नाम है एड अ सिग्नेचर लाइन। ठीक है, अगर आप इसको क्लिक करते हैं, आप सजेस्टेड साइनर की बात करते हैं, से हमारे केस में सुप्रीत अग्रवाल है। ठीक है, आई एम नॉट श्योर ये फंक्शन कैसे काम करेगा। ओके, टाइटल इज फाउंडर, और ईमेल एड्रेस है हमारा द लैंड ऑफ लर्नर्स @gmail.com। ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस है, और हमने इसको ऐड किया तो देखिए यहाँ पे साइन आ गया हमारा।
ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएंगे कि हम यहाँ पर आराम से इस फाइल को साइन कर सकते हैं और अपने सिग्नेचर्स यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सबसे पहले यहाँ तक समझ में आता है या यहाँ पे कोई क्वेरीज है? प्लीज टेल मी। यहाँ तक समझ आता है या यहाँ पर कोई क्वेरीज है? प्लीज टेल मी। क्लियर है? ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? क्लियर? ओके, दैट्स ग्रेट। नाउ हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब पता है क्या होता है? हम लोगों को यहाँ पर कोई एक फाइल है जो कि ऐड करनी है, कोई एक फाइल है जो कि ऐड करनी है। वी कैन क्रिएट अ न्यू फाइल एज वेल। ये देखिए यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, बट अभी के लिए हम लोग एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक एग्जिस्टिंग फाइल को हम लोग यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। हमने ब्राउज ऑप्शन पर क्लिक किया कि हमें किसी फाइल को इंसर्ट करना है। हम गए डाउनलोड्स के अंदर और हमने जल्दी से जाकर यहाँ से एक डॉक्यूमेंट उठाया और उसको वहां पर, ये हमारे क्यूआर कोड था, हमने इसको उठाया और बोला डिस्प्ले एज आइकन कर कर हमने इसको ऐड कर दिया। ये देखिए अभी ये डिस्प्ले एज आइकन आ चुका है। अभी ये डिस्प्लेस आइकन आ चुका है। अब हम जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो सीधा वो फाइल ओपन हो जाती है। अच्छा, हाइपर लिंक और इसमें क्या फर्क है? हाइपर लिंक में लिंक आती है, ठीक है, और यहाँ पर लिंक नहीं, यहाँ पे वो डायरेक्टली क्यूआर कोड ही आ रहा है। ओके, एक और ऑप्शन था इसके अंदर जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, हम लोगों ने क्रिएट फॉर फाइल पे क्लिक किया, वापस से क्यूआर कोड को स्कैन किया, यहाँ पर इस बार लिंक टू फाइल पे क्लिक किया। डिस्प्ले आइकन पिछली बार क्या हुआ था, इस बार लिंक टू फाइल पे क्लिक किया, और जैसे ही किया तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली इमेज ही आ गई। ठीक है, यहाँ पर आपको लिंक आती है, यहाँ पर आपको डायरेक्टली इमेज आ जाती है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, अब आते हैं इक्वेशन पर। इक्वेशन में यहाँ पे देखिए आपके पास कितनी सारी इक्वेशंस है, यहाँ पे कितनी सारी इक्वेशंस है जो आपको ऑप्शन दिया जाता है, आप उसमें से सिलेक्ट कर लो। इसमें से बहुत सारी, एरिया ऑफ सर्कल फॉर एग्जांपल, कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल फॉर्मेट में लिखा हुआ है और उसके बहुत सारे एडिटिंग ऑप्शंस हैं। फ्रैक्शन रिलेटेड इक्वेशंस, स्क्रिप्ट रिलेटेड, रेडिकल रिलेटेड, इंटीग्रल कैलकुलस, सब चीजें यहाँ पर आ जाती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ब्रैकेट भी आ जाता है, फंक्शन भी आ जाता है, एसेंट एक्सेंट भी आ जाता है, ऑपरेटर भी आ जाता है, मैट्रिक्स भी आ जाता है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, अंडरस्टूड दिस पॉइंट? अंडरस्टूड दिस पॉइंट? आई होप इट इज क्लियर। आई होप इट इज क्लियर। प्लीज कंफर्म ऑन द चैट बॉक्स। यस, यस, okay, that's great. Now we are moving towards the last topic for today, which is symbol. See, these symbols are nothing very specific. These symbols are like general symbols which are not available on a keyboard. For example, if I want the opposite dollar sign, okay, inverted dollar sign, or if I want the signature of Fahrenheit, or if I want anything in cursive writing, if I want anything, for example, Celsius, so there might not be, or registered symbol, trademark symbol, these symbols might not be available, or these symbols I might not be able to create on Microsoft Excel by using the direct keyboard shortcuts. And that is why there is an option to create symbols. For example, if I click on this trademark and click on this insert, I'm sure trademark would have been mentioned over somewhere. Let me check. Okay, I'm going for this trademark and I'm clicking on insert. See, this trademark code has been inserted. This trademark symbol has been inserted, and that is the use of symbols. There are multiple symbols like that. Okay, let us just quickly read what all symbols are available. So trademark symbol, SM symbol, okay, one or two, copyright symbol also, okay, then certain other languages symbols also. So all of these symbols are available in Microsoft Excel. Latin symbols are also available in Microsoft Excel. Did you understand everything today? So what we have discussed today, we have started from, so today we have started from the discussion of line, column, win-loss, slicer, timeline we have left for today, then link, text box, header and footer, then word art, then signature, then object, then equation and symbol. I hope you understood everything for today's session. I hope you understood everything in today's session. Please confirm.
Yes, yes, that's great. Thank you so much. And really sorry for the inconvenience caused. Although it is not an inconvenience from my end, you guys delayed in joining the session using the appropriate channel. So please feel free to join through the appropriate channel. And for anybody who has not joined from the appropriate channel as of now as well, I would really, really request you to please join from the appropriate channel so that lectures could not be terminated by any source. Okay. In the next lecture, we would be first of all completing the timeline button, and then we would be moving towards page layout, and we would be discussing about each of these things. Now, I'm telling you one thing, that page layout, review and view, these three tabs are going to be really, really interesting for you, because in page layout, we would also understand how to insert backgrounds, how to do the right kind of printing, how to delete the grid lines, the lines that are displayed, how to use two or three shapes in one file and use it together as well. So how to change the Excel theme as well. For example, my Excel looks black, right? So how to change the Excel themes as well, how to change the color, fonts, effects in the Excel file. So that is why it is really going to be an interesting session. So I hope to see you all in that session. I hope you really like today's session. Thank you so much for attending. If there are any queries, I would love to answer them. If not, uh, you can feel free to leave the session. Thank you so much. Thank you. The recording would be made available to you within 24 to 48 hours. Thank you so much. Thank you so much, Nidhi. Thank you so much, Aishwarya. So now we have good strength, right? Thank you, Nivedita. Thank you, Dhruv. Thank you, Divya. Thank you, Sajal. Okay, I can see someone by the name of Django OP. I'm not uh, sure how did you join the session, but welcome to the session. Thank you so much. Abhiram, you are there. Django OP. Okay, that's great. Great, Abhiram. Thank you so much for attending the session. I was actually planning to delete you from the session, but then I thought that this might be somebody uh, with a change name. So thank you so much for joining the session, Abhiram. Thank you. It's okay. It's okay. It's funny. Thank you so much.